Hello students. Today we are going to study the next topic, that is cotton textile industry. As you know that the rank of India is second in the production of cotton textile. So what is the rank of India? The rank of India is second in the production of cotton textile and the rank of China is first. First modern textile in India was started in Fort Gloucester of Kolkata, and it was started in the year 1880, but these efforts were failed. This cotton textile industry was not successful. Which cotton textile industry was not successful? Fort Gloucester of Kolkata in 1880. Then first Indian textile mill was established by Kawasji Dabur, and it was established in the year 1854. So the first Indian textile mill was established by Kawasji Dabur, and it was established in the year 1854. And the contribution of the cotton textile in GDP is 40%. So what is the contribution in GDP? 40%. And there is centralization of the cotton producing area. Why? Because of the cheap transportation, labor and moist climate. Means in this area they are suitable for the cultivation and the production of the cotton. That's why there is centralization of the cotton. And there are states where there is production of the cotton. So we will study these states one by one. Now the state whose rank is first in cotton textile production. So that state is Maharashtra. So Maharashtra is the state whose rank is first in the production of cotton textile. And the number of mills in the Maharashtra are 112 mills. So how many mills are in Maharashtra? 112 mills are present in Maharashtra, out of which only 54 mills are present in Mumbai. And that's why Mumbai is known as the capital of cotton textile. So which city is known as the capital of cotton textile? Mumbai is known as the capital of cotton textile. Then which conditions are suitable in Maharashtra for the production of the cotton? First, in Maharashtra, black soil is present and the climate is moisture. Climate contain the moisture, and these conditions are suitable for the production of the cotton. Which condition? Black soil is present and the climate is moist, or climate contain moisture. And the total cotton production in Maharashtra is 39%. 39% production of the cotton is from the Maharashtra state. Then the state who holds second rank in the production of the cotton, that is Gujarat. The rank of Gujarat is second in the production of the cotton, and the number of mills present in Gujarat 135, out of which 67 mills are only present in Ahmedabad. And the conditions which are suitable for the production of cotton textile in Gujarat is presence of cotton growing regions, cheap labor, money. गुजरात के पास sufficient amount of money है, and the Kandla port also play an important role in the production of the cotton. And the contribution is 35%. 35% of cotton production is from Gujarat. And in Ahmedabad, 67 mills are present, and Ahmedabad is known as Boston of East. So which is known as Boston of East? Ahmedabad. Ahmedabad is known as the Boston of East. Then in South also, there are states who are also producing the cotton. In
South, the largest cotton producing area is Tamil Nadu. Or in South, the largest cotton producing state is Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 205 mills are present. तो तमिलनाडु में कितने मिल्स प्रेजेंट है? 205. ज़्यादातर मिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? कोयम्बटूर. ज़्यादातर कॉटन से रिलेटेड जो मिल्स है दैट आर प्रेजेंट इन द कोयम्बटूर. एंड द क्लाइमेट contain moisture and Chennai port, these are the suitable condition for the production of the cotton, and 6% of the production of the cotton is from Tamil Nadu. तो कितना परसेंट प्रोडक्शन तमिलनाडु से है? 6%. उसके बाद में एमपी में कितने मिल्स है? 36 मिल्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश. एंड 5% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस फ्रॉम एमपी. एमपी से कितना प्रोडक्शन होता है? 5%. उसके बाद में वेस्ट बंगाल में कितने मिल्स है प्रेजेंट है? 24. ज़्यादातर मिल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हुगली रिवर्स. ये रीजन में मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स दे आर प्रेजेंट इन हुगली रिवर रीजन. हुगली रिवर के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स प्रेजेंट है. इसके अलावा राजस्थान में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दैट इज एट इनिशियल स्टेज. तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनिशियल स्टेट में है? दैट इज इन राजस्थान. अब राजस्थान में सुटेबल कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चीप एंड गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल है भाखला नांगल प्रोजेक्ट. और कितना कंट्रीब्यूशन है? 4% कंट्रीब्यूशन. कॉटन प्रोडक्शन राजस्थान में कितना होता है? 4%. राजस्थान में किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? ओनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ. ओनली शूटिंग एंड शर्टिंग क्लोथ्स आर प्रोड्यूस इन राजस्थान. नाउ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट रैंक किसका है? महाराष्ट्र. सेकंड रैंक गुजरात का. साउथ में कौन से स्टेट में होता है? तमिलनाडु में. उसके अलावा महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में विच सिटी इज नोन एज कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? मुंबई इज नोन एज कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. एंड बोस्टन ऑफ ईस्ट इज कौन से सिटी को माना जाता है बोस्टन ऑफ ईस्ट? अहमदाबाद इज नोन एज द बोस्टन ऑफ ईस्ट. उसके बाद में नंबर ऑफ मिल्स देखते हैं. महाराष्ट्र में कितने मिल्स है? 112. एंड इसमें मुंबई में 54 है. गुजरात में कितनी है? 135. एंड अहमदाबाद में कितनी है? 67. तमिलनाडु में 205 मिल्स प्रेजेंट है एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स आर प्रेजेंट इन कोयम्बटूर. मध्य प्रदेश में 36. वेस्ट बंगाल में 24. So what is your homework? So you have to prepare a chart like this and you have to prepare the chart. Then you have to learn number of mills and which conditions are suitable for the production of the cotton and why and which city is known as capital of cotton textile and which city is known as the Boston of East. So you have to write down the answer of these questions also.